Static example. Okay. So in the previous class, I have discussed about the static example. Then now check. Yeah. देखो static ex, static int count. We are defining a variable static int count. Then now यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर है. एक कंस्ट्रक्टर क्या करेगा ना, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे तो व्हेन यू डिफाइन ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास at that timing the constructor is called. Now static exi equals to new static ex. So when you are creating a object of class at that timing constructor is called. जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, आपका जो काउंट वेरिएबल है उसका वैल्यू इंक्रीमेंट होगा. डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज 0, तो 0 + 1 इज 1. ओके, तो यहाँ पर काउंट में क्या स्टोर होगा ना, 1 स्टोर होगा. फिर जब मैं दूसरा बार ऑब्जेक्ट बनाता हूं, और एक बार मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, दैट इज स्टैटिक j इक्वल्स टू न्यू स्टैटिक ex. और एक जब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, दूसरे बार आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. जब आपका दूसरे बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तभी आपका जो पहला का वैल्यू, जो काउंट का वैल्यू 1 हुआ था, वो रीइनिशियलाइजेशन नहीं होगा, वो फिर से 1 के बाद 2 प्रिंट करेगा. मतलब यहाँ पर 1 और 2 दो डिस्प्ले करता है. So now check when I run the program, what is the output? तो दूसरा पेज ऐड होने के बाद ये भी फंक्शनल हो जाएगा. अच्छा, ऐड नहीं किया हम ना, ऐड में भी हम यहाँ पे ऐड नहीं किया, वो पेज ऐड होगा बाद में. See that it is showing you here 1 and 2. Now what happen if I remove static? जब मैं static कीवर्ड हटा देता हूं तो क्या होता है, तो every time when you are creating a object of class, every time variable is reinitialized. देखो, जब मैं स्टैटिक हटा दिया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइजेशन हुआ कितना, 0. 0 + 1 इज 1, तो 1 शो किया. देन और एक बार ऑब्जेक्ट बनाया तो वेरिएबल वैल्यू अगेन री इनिशियलाइजेशन हो जाएगा. ओके, सो 0 + 1 अगेन 1. जब मैं स्टैटिक डिफाइन करता तो यहाँ पर आप जितना भी ऑब्जेक्ट बनाओ, वेरिएबल का वैल्यू री इनिशियलाइजेशन नहीं होगा. क्लियर? दिग्विजय, आत्मज्योति, मानव, आशीष, शुभम, बुझेला? नहीं सर, ଶୁଣୁଛି. ओके. So now I move to Java operators. रूम रेंट कितना ले रहा है? रूम रेंट 7,000 विथ इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, 1 BHK ना 2 BHK? 1 BHK. 1 BHK ना. Then working with operators. सर मैं आशी.
So what are the operators are available? Now check. Operators, it is basically it is used to work with the operand. Operand means your variable where you store the value, and in Java we are using a different type of operators like arithmetic operator, logical operator, relational operator. So these are the variety of operator we are using in Java. Okay, and every operator is used for unique purpose and they are doing their work. Now check here. So now check here. Sam needs to calculate the number of attempt in which the user gives the correct answer for a jumbled word. The application should validate the user input. The application should increment the counter 1 for each attempt. The user provide an incorrect input. So first of all, the Sam wants to add the number and Sam want to check whether the value is correct or not. For such calculation and comparison, Java provide various type of operators. What are the operators are available and what is the work? An operator is a special symbol that is combined with one or more operand. Operand means that is called as the x and y is called the operand where we is storing a value. X and y is called the operand, plus is called the operator. X and y is called the operand, plus is called the operators. And in Java, we have arithmetic operator, assignment operator, comparison operator, logical operator, unary operator, bitwise operator, shift operator, and ternary operator. So these are the operators are available. Now in arithmetic operator are used to perform the arithmetic operation on the operand. What are the arithmetic operators are available? Like plus, minus, multiplication, division, and modulo. So these are the arithmetic operators are available. Plus is used for to add the number, minus is used to subtract the number, multiply is used to multiply the number, divide is used to divide a number, modulo is used to showing the remainder part. For showing the remainder part, modulo is used. And now comes to the assignment operator. This assignment operator is of two types. One is simple assignment operator, another is complex assignment operator. Simple assignment operator क्या है? Suppose I pass a is equals to 5. When I pass a is equals to 5, it is called as the simple assignment operator. Complex assignment operator is what? If I write a plus equals to b, it means a is equals to a plus b. It is called as the complex assignment operator. It is a simple assignment operator. Another is complex assignment operator. Now,
what to do here, what are the different complex assignment operators there. Complex assignment operator are also known as arithmetic assignment operator. It is called as the shorthand for their equivalent long term. It is a shorthand for their equivalent long term application. If I write plus equals to, it is used to add the two number and assign the result to a variable. This add the two number and assign the result to a variable. If you write minus equals to, it is subtract the number and assign the value. Similar way, multiplication equals to, division equals to, and modulo equals to. These are the 5 different type of operators that we are using. Understood? Shubham, Sir. Digvijay? Then comes to the comparison operator. Comparison operator are used to compare the two value. It perform an action on the basis of result of comparison. Whenever you use the comparison operator, the expression result in the boolean value is true or false. Like we are using here, greater than, less than, greater than, less than equals to, greater than equals to, equals to, and not equals to. So these are the different comparison operator we are using. Now check here. If I write a equals to 5, it is called as a simple assignment operator. If I mention a is equals to 5, it will check that whether the value of a is equal to 5 or not. It is called as a for condition checking, or it is used for comparison. It is used for comparison, and the first one is used for simple assignment operator. Next, we're using instance of operator. Instance of operator, basically it is used when you are creating a object of class. जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए, सपोज डेमो एक क्लास है, डेमो आई इक्वल्स टू न्यू डेमो, और एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया डेमो जे इक्वल्स टू न्यू डेमो. अगर मैं टू ऑब्जेक्ट बनाता हूं and if they are giving a reference to the same class or not, for checking that we are using instance of operator. The instance of operator is used to check whether the two object giving giving reference to the same class or not.
So in that cases we are using instance of operator which is used to check whether the two ऑब्जेक्ट, मतलब एक क्लास का अगर आप दो ऑब्जेक्ट बनाते हो, दोनों ऑब्जेक्ट सेम क्लास को रेफरेंस दे रहे हैं कि नहीं, उसको चेकिंग करने के लिए हम इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यहाँ पर यूज करते हैं। क्लियर? आशीष, शुभम, ऋतु, बुझेला? सर Yes, ଟିକେ sir. ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା କହିବେ। ଦେଖାओ। So now check here. Here, if you notice, here we are creating a two object of class. Static I एक ऑब्जेक्ट है और स्टैटिक j एक ऑब्जेक्ट है। तो I और j जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया, तो ये किसको रेफरेंस दे रहा है? सेम क्लास को रेफरेंस दे रहा है। तो इंस्टेंस ऑफ चेक करेगा ये दोनों I और j जो ऑब्जेक्ट है वो सेम क्लास को रेफरेंस दे रहे हैं कि नहीं। अगर सेम क्लास को रेफरेंस दे रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रू। अगर सेम क्लास को रेफरेंस नहीं दे रहे हैं उसको फॉल्स बोला जाएगा। ओके, यस सर। शुभम बुझेला? शुभम, okay, so that is the actually work of instance of operator. Then now I will go for the logical operator. Excuse me. In logical operator we are using AND operator, AND operator we are using true true, we return you true, true false, return you false, false false,
return you false. OR operator, true true, return you true. True false, return you true. False false, returns you false. So in the case of so in the case of not operator, if true, it return you false. If false, it return you true. So in the and in OR operator, it will check the two condition. In the case of and में क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होता है तो आपका ट्रू रिटर्न करेगा. अगर किसी भी एक कंडीशन फॉल्स हुआ वो फॉल्स रिटर्न करेगा. और में क्या होगा, इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू, अगर कोई भी कंडीशन एक भी कंडीशन ट्रू रहता है देन आपको ट्रू रिटर्न करेगा. अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा. इन द केस ऑफ नॉट ऑपरेटर, इट विल चेक ओनली वन कंडीशन, एक ही कंडीशन को चेक करेगा. अगर ट्रू होता है देन फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स होता है देन ट्रू रिटर्न करेगा. क्लियर? शुभम, आशीष, दिग्विजय, ऋतु. Yes, sir. Clear. Then we're using unary operator. An operator that required only one operand is called as the unary operator. Unary operator indicate a positive value. Okay, so if you write plus a, it is called as the positive value. If you write minus a, it represent negative value. The plus a, it represent you positive value, minus a, it is represent you negative value. If you write plus plus, if you write
plus plus a, it is increment the value with 1. Minus minus a by 1. Plus plus a, it is increment the value by 1. Minus minus, it is decrement the value by 1. Then in this operator, it is having pre-increment and post-increment. तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा ना, यहाँ पर अगर देखोगे अगर हम लिखेंगे प्लस प्लस ए, इट इज कॉल्ड एज द प्री इंक्रीमेंट. It means first it increment the value then display. If I write minus minus a plus plus, then first display then increment. So plus plus a means it is a pre-increment. First increment the value then display. A plus plus means first display then increment. That is the work of unary operator. Now if I write a is equals to 5, it comes in the exam, and I write x equals to plus plus a, then what is the value of x here and what is the value of a here? After a का वैल्यू 5 है, a स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद x का वैल्यू कितना होगा? 6 सर. x वैल्यू 6, a वैल्यू 5. a वैल्यू 5. एनी अदर आंसर? ऋतु, शुभम, शुभम, it means what? No, it means what? First increment. First increment to whom? First increment the value of a, means a is now 6. Now x is, when this becomes 6, x is automatically 6. If I write a is equals to 5, x equals to a plus plus, that means first it is display then increment. First display the value of whom?
So x equals to a means here x equals to 5. Then it is increment. किसको इंक्रीमेंट करेगा? a को इंक्रीमेंट करेगा. a का वैल्यू 5 है, यहाँ पर हो जाएगा 6. So this is the scenario that we're using in the unary operator. तो इसको नोट कर देना. Okay. So in the next class, I will show you the other operators. Okay, like logical operator. Okay. चलो. Good night, sir. Good night. गुड नाइट सर. Good night. Okay.